Yes. Okay. So let us have this reaction and try to find out the uh, net rate constant के लिए expression. So can you guys try over this? अच्छा यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है बट फास्ट इक्विलिब्रियम को आप लोगों को यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है क्या, जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करना है. ठीक है, you guys have to derive general expression. Are we getting this point? Yes, sir. जनरल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. सॉरी, वो पिछले वाले में जो हमने किया था दैट वाज द जनरल एक्सप्रेशन.
जहां से फिर दोनों चीजें डिड्यूस होकर के आ गई थी। या दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूशंस वगैरह के बाद इट इज बिकमिंग, सब्स्टिट्यूशन के बाद इट इज बिकमिंग explicit one. So you can solve it like this only. और हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना होता है हमको, फाइनल इक्वेशन जो रहेगा that should be in form of Cu and Cl2. That is the key which we have to put. Cl का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में Cl का फॉर्मेशन हो रहा है और लास्ट स्टेप में Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली और इसके बैक स्टेप में भी Cl का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 फॉर्मेशन वाले स्टेप्स हैं और 2 कंजम्पशन वाले स्टेप हैं। बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ दिस एंड फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ दिस, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर 5 एक्सप्रेशंस आएंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन, सर थोड़ा रिपीट कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा था कि ये अगर इक्वेशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो Cl का कंजम्पशन जो है Cl फ्री रेडिकल का, वो 2 रिएक्शंस में हो रहा है, स्टेप 2 के फॉरवर्ड रिएक्शन में और स्टेप 1 के बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। ये 2 जगह पे कंजम्पशन हो रहा है। फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो स्टेप 1 के फॉरवर्ड रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेप 2 के बैकवर्ड रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है और स्टेप 3 में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होंगे फॉर्मेशन के लिए, इट्स गोइंग टू बी K1 into concentration of Cl2 plus K minus 2 concentration of COCl plus
concentration of K3 into concentration of COCl into concentration of Cl2 माइनस कंजम्पशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में कंजम्पशन हो रहा है, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन बन के कंजम्पशन हो रहा है. इट विल बी K minus 1 Cl का concentration स्क्वायर, ये बैकवर्ड रिएक्शन सॉरी बैकवर्ड में फॉर्मेशन हो रहा है, फॉरवर्ड में कंजम्पशन हो रहा है. तो या तो यहाँ पे ब्रैकेट मार ले, नहीं तो इस स्टेप में भी हम लोग लिखेंगे K2 concentration of CO into concentration of Cl free radical. Is it okay? ये चीज समझ में आ रही है हम लोगों को? अच्छा, Okay. And this can obviously be equated to 0. अब 0 के साथ अभी इक्वेट करके इसको हम लोग इसी तरीके से रोक के रखते हैं. We'll see what conclusive can we draw from it or what conclusive do we need from it. ठीक है. ये दूसरा वाला जो है COCl, इसके ऊपर हम वर्क अराउंड करते हैं. तो COCl का रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है D of COCl divided by dt is equal to rate of formation. यहाँ पर भी rate of formation minus rate of consumption. और rate of formation जो है हमारा COCl is getting formed only in this reaction and it is being consumed in two reactions, इसका backward और इसका forward. So it is going to be K2 into concentration of CO into concentration of Cl minus K minus 2 concentration of COCl minus K3 concentration of COCl into concentration of Cl2. This is going to be equated to 0. We did exactly in we started with the basic rate of the reaction from step 3, and then Cl and COCl are intermediate species not appearing in the end reaction, and therefore their concentration can be equated to 0
इन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस, तो Cl के लिए हमने पहले Cl फ्री रेडिकल के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl, फॉर्मेशन पहले स्टेप में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, दूसरे स्टेप में बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है और तीसरे स्टेप में फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो ये नेट फॉर्मेशन रेट हो गया। और दूसरा वाला जो है वो कंजम्पशन का है। कंजम्पशन फर्स्ट वाले के बैकवर्ड रिएक्शन में और सेकेंड वाले के फॉरवर्ड रिएक्शन में Cl का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट में डाल लेते हैं। सो फर्स्ट वाले के बैकवर्ड में और सेकेंड वाले के फॉरवर्ड में स्क्वायर क्यों हुआ? बेसिक सी चीज है, दिस इज एन एलिमेंट्री स्टेप। स्टेप्स लिख रहे हैं मतलब मैकेनिज्म के स्टेप्स लिख रहे हैं, दैट मींस दे आर गोइंग टू बी एलिमेंट्री स्टेप। दो क्लोरीन रेडिकल्स बन रहे हैं, तो बैकवर्ड जब आएगा तो ये दिस विल बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉरवर्ड में ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा से और बैकवर्ड में ये सेकंड ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसलिए ये लिख लिया। दिस बिकम्स इक्वेशन 2। सिमिलरली COCl के लिए हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन करके एंड इस नेट रेट ऑफ चेंज जो है दैट विल बी इक्वेटेड टू 0 अंडर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बिकॉज दैट इज एन intermediate, it will get eventually consumed. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? सेकेंड स्टेप में ये फॉर्म हो रहा है, सिर्फ सेकेंड स्टेप में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि कंजम्पशन सेकेंड के फॉरवर्ड स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड के बैकवर्ड और थर्ड के फॉरवर्ड दोनों में ये कंज्यूम हो रहा है। COCl फॉरवर्ड सेकेंड स्टेप के फॉरवर्ड में फॉर्म हो रहा है और बैकवर्ड में कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पर भी कंज्यूम हो रहा है थर्ड स्टेप में। देयरफॉर वी हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन। टू एंड थ्री से इसमें बेसिकली हमने सॉल्व किया, COCl को एक तरफ लेकर के आ गए एंड देन we try to derive an expression for COCl. COCl के expression में we have CO, Cl2 and concentration of Cl also, free radical Cl. Now free radical Cl is something which is intermediate and hence I need to remove this from this expression with some suitable substitutions. What could be that substitution? Looking closely at equation 2 and equation 3, we are able to conclude that K minus 2 COCl plus K3 COCl into Cl2 minus K2 COCl. These three terms are equated to 0 in equation 3. Okay? So if I am going to add equation 2 and equation 3 together, these terms will vanish and the remaining thing will be K1 Cl2 minus K minus 1 Cl whole square. So if we add equation 2 and 3, we are going to have these two things remaining and rest things will cancel out in equation 2 and equation 3. And from here we have expression for Cl free radical, concentration of Cl free radical equal to K1 divided by K minus 1 Cl2 whole to the power 1 by 2. Okay. Now putting this fifth expression in fourth one, we are able to get this sort of expression K2CO into K1 by K minus 1 Cl2 raised to the power 1 by 2 K minus 2 plus K3 Cl2 and so on so forth. Rate of the reaction, what we are getting is we are just putting this COCl ka concentration in the equation 1 which we had written at the beginning of the solution, and Cl2 is there, K3 is there, so all of them are going to remain there. So this expression becomes something K3 into concentration of COCl
this term divided by this term, this is part of the same expression, into Cl2, and then things are being multiplied together and terms are collected. The rate constants are collected at one place, the concentration terms are collected at one place, and this becomes the final expression. Now, at the end of it, we are making the final statement that as step 3 is a slow step, and therefore in denominator k minus 2 plus k3 into Cl2 should be equal to k minus 3, because k3 is the smallest one, has to be smallest among k1, k minus 1, k2, k minus 2. K3 has to be smallest among all of them. Like if K3 is very small compared to K1, K2, K minus 1 and K minus 2, then K minus 2 plus K3 Cl2, this can be approximated to K minus 2. If we do so, the final rate equation turns out to be K3 into K2 by K minus 2 into K1 by K minus 1 raised to the power half COCl2 3 by 2, and this thing becomes K net. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, which is a smaller one. It will be, I mean, maybe liked by you guys. But उसके लिए हमारा ये पता होना हमको जरूरी है. It's very much necessary that we must know this is a fast equilibrium reaction. ठीक है? And this step is also a fast equilibrium reaction, whereas third reaction is a slow step. ठीक है? Or the slowest step. So ये rate of the reaction तो मेरा यही रहेगा. Rate will remain the same. K3 into COCl into Cl2. अब instead of replacing or putting all those steady state approximations, I can directly take it from here that K1 by K minus 1 is equal to Cl का concentration of free radical का square divided by Cl2 का. ठीक है, ये 2 नंबर हो जाएगा. यहाँ से हमको आएगा K2 by K minus 2 is equal to COCl divided by concentration of Cl into concentration of CO. ठीक है, और Cl को यहाँ से मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. What will it become? Concentration of Cl is equal to K1 K minus 1 into Cl2 whole raised to the power half. ये हो गया इक्वेशन 3. Cl को यहाँ पे रख दूंगा तो COCl, यहाँ पर Cl को रखा और Cl के COCl के लिए मैं एक्सप्रेशन निकाल लूंगा. COCl is equal to K2 by K minus 2 multiplied by concentration of Cl into concentration of CO. CO को कुछ नहीं करेंगे, वो रिएक्टेंट में भी है, रिएक्शन के रिएक्टेंट में है. Cl जो है फ्री रेडिकल, दैट इज कमिंग फ्रॉम in between steps and disappearing. Therefore, COCl is equal to K2 K minus 2 multiplied by K1 K minus 1 raised to the power 1 by 2 into Cl2 1 by 2 into CO. ठीक है,
और इस कंसंट्रेशन को मैं अपने फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा. That will become rate is equal to K3 into K2 K minus 2 multiplied by K1 K minus 1 raised to the power 1 by 2 Cl2 1 by 2 CO into Cl2. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. This is the expression for COCl. Final rate जो लिखेंगे that will become K3 something like this K1 K minus 1 raised to the power 1 by 2 K2 K minus 2 into K3 CO carbon monoxide multiplied by Cl2 raised to the power 3 by 2. ठीक है? So from both expressions or both approaches we are going to get the same expression. We are able to see that we are getting same expression. This is relatively you are doing lesser number of steps and you are still getting it, but this is not a general expression. This is a specific expression when we know that this is a fast equilibrium and this is a fast equilibrium as well, right? If we don't know that this is fast one, if we just know that this is just an equilibrium expression and we don't know whether this is slow or fast, or maybe all the three are going at same comparable they are going at same comparable rates, then also this expression is going to be valid one. ठीक है, ये वाला जो expression है rate of the reaction का, this is going to be valid one, but the other will not. बात समझ में आ रही है? ये वाला सही नहीं रहेगा, ये वाला सही नहीं रहेगा, ठीक है, बट ये वाला जनरल एक्सप्रेशन है, ये हमेशा सही रहेगा. बात, इज इट ओके? Yes, sir. वेरी गुड. लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ. अच्छा, ओके. सर ये लेक्चर कब तक होगा? तक पढ़ना है. तो 8 बजे पेपर देने बैठना है. अच्छा, 8 बजे पेपर देने बैठना है. ठीक है, एक क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन कर लो. एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ. मैंने ये क्वेश्चन भेजा है ग्रुप के अंदर में.